Hello and welcome to Physio Classroom. This our fourth lecture on roots therapy और आज हम बात करेंगे रूट्स की फैसिलिटेटरी टेक्निक्स के बारे में। इन टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पेशेंट्स के अंदर, स्पेशली जिनको हाइपोटोनिया हो या जिनके अंदर मसल वीकनेस हो। इस टेक्निक को यूज़ करके आप टोन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं और आप मूवमेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पहली टेक्निक के बारे में। दिस टेक्निक इज़ नोन एज light moving touch. All you need to have is your fingertips or you can also use a camel hair brush. आपको सबसे पहले एक डर्मेटोम आइडेंटिफाई करना है। वो डर्मेटोम का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? इट विल डिपेंड अपॉन विच मसल यू वांट टू एक्टिवेट। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पेशेंट में यू सी कि पेशेंट के ट्राइसेप्स में एक्टिवेशन नहीं है, सो यू विल सेलेक्ट दी C7 dermatome. Now you need to apply your fingertips over that dermatome in this fashion for 3 to 5 repetitions. After this, you have to take a break of 30 seconds and wait for the muscle to respond, and during that time you need to give some activity to the patient so that there is cortical facilitation as well. जब आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो इससे इम्प्रूवमेंट कैसे आता है? व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट? So the stimulation here is the slow moving or light moving touch. This stimulation is perceived by the hair and organs and the free nerve endings that are present in your skin, and this stimulation is transmitted to the spinal cord via the A delta fibers. From the posterior horn of the spinal cord, this information is transferred then to the anterior horn, and via the alpha motor neuron it reaches the muscle spindle of the target muscle, and you get a muscle contraction or a response using this technique. The second technique given by Roots is known as fast brushing. इसका application एकदम same है as that of the light moving touch. All you need to have is a rotatory hair brush which is easily available in market, or you can also use a brush which has thick strands. इसको भी आपको similar fashion पे उन डर्मेटोम्स पर अप्लाई करें जिसके मसल्स या रिलेटिव मसल्स को आपको स्टिमुलेट करना है। एक खास बात इस टेक्निक की ये है कि इफ़ यू यूज़ फास्ट ब्रशिंग, इट विल नॉट ओनली एक्टिवेट द मसल्स, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू इम्प्रूव द सेंसरी फंक्शंस इन योर पेशेंट। पेशेंट की कॉर्टिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होती है बिकॉज द एफरेंट हेयर इज द C fiber which also sends collaterals to the reticular activating system present around the brain stem, और पेशेंट के कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाने में भी आपको हेल्प मिलेगी। एक और ख़ास बात इस टेक्निक की ये है कि जब आप फास्ट ब्रशिंग अप्लाई करते हैं तो इस केस में जो एफरेंट फाइबर्स हैं वो C फाइबर्स हैं, एंड दीज फाइबर्स सेंड कोलैटरल्स टू द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इन योर ब्रेन अराउंड द ब्रेन स्टेम एरिया। इसकी वजह से अगर ऐसे पेशेंट्स आप ट्रीट करते हो जिनके अंदर आपको अराउजल की प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट ज़्यादा अलर्ट नहीं रह पाता है, तो ये टेक्निक आपको इसमें भी हेल्प करेगी। द थर्ड टेक्निक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नोन एज A icing. It is also called as quick icing. In this technique, you need to have an ice cube, and you can hold the ice cube using a gauze or a piece of cloth, and you have to apply it on the target muscle over the overlying skin for 3 quick swipes, and you have to immediately wipe the water using a handkerchief after the swipe and ask the patient to perform the activity that you think can facilitate the muscle contraction. क्विक आइसिंग से आप मसल कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव तो करते ही हैं, साथ ही because this type of facilitation is mediated by the A fibers and the information ascends up to the level of the brain, there is also an autonomic reflexive activity that is generated by this technique. The fourth technique that we are going to discuss is known as C icing. This technique is used mainly to activate the postural or the anti-gravity muscles in the patient. अगर आपके पेशेंट के अंदर हेड कंट्रोल पुअर है, सिटिंग में पेशेंट आपका ढंग से नहीं बैठ पा रहा है, तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। इस टेक्निक को यूज़ करने का तरीका सिंपल है। आपके पास एक आइस क्यूब होना चाहिए और आपको उसको डिज़ायर्ड डर्मेटोम के ऊपर
प्रेशर के साथ एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स तक रखना होता है। ये टेक्निक सी फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है। आप इस टेक्निक से पेशेंट की मेंटल अलर्टनेस को भी बढ़ा सकते हैं और उसकी एंटी ग्रेविटी मसल की टोन को भी आप इंप्रूव कर सकते हो। द फिफ्थ फैसिलिटेटरी टेक्निक गिवन बाय रूट्स इज नोन एज अप्रॉक्सीमेशन। इस टेक्निक को आपने भी कई बार अपने पेशेंट्स में यूज़ किया होगा। इस टेक्निक के लिए आपको पेशेंट को किसी भी एक डेवलपमेंटल पैटर्न में ले जाना है और उसके जॉइंट को ईदर मैनुअली और यूजिंग वेट कफ्स या सैंड बैग आपको जॉइंट को अप्रॉक्सीमेट करना है। इससे जॉइंट के प्रोप्रियोसेप्टिव्स स्टिमुलेट होते हैं और इसकी वजह से जॉइंट की स्टेबलाइजिंग मसल्स के अंदर टोन इंप्रूव होती है। तो पेशेंट की जॉइंट की स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट टेक्निक गिवन बाय रूट्स इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। इस थेरेपी को यूज़ करने के लिए you need to have an electrical vibrator and you should ensure that it gives a frequency of 100 to 200 cycles per second. इसका स्टिमुलेशन टेक्निक भी सेम है, आपको डर्मेटोम को स्टिमुलेट करना है so that you get a myotomal response. जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि you should not give it for more than 1 to 2 minutes at a time because vibration produces a lot of heat and friction in the skin. The next facilitated technique that we are going to discuss is stretch. Stretch has been further subclassified into 3 types: intrinsic stretch, secondary ending stretch, and stretch pressure. Intrinsic stretch refers to the stretch that is given to the intrinsic muscles of your hand. For delivering this technique, you need to bring the patient on prone on elbows. ये टेक्निक आप यूज़ करते हैं स्पेशली व्हेन यू फाइंड दैट इन योर पेशेंट द शोल्डर स्टेबिलिटी इज़ लैकिंग। इस टेक्निक को करने के लिए आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें जो पेशेंट के हाथ में आराम से आ सके और उसका हाथ रिलेटिवली ओपन रहे। ही शुड बी इन प्रोन ऑन एल्बोज पोजिशन एंड द मोर वेट हैज़ टू बी borne ऑन द अल्ना साइड। नाउ आस्क द पेशेंट कि उस ऑब्जेक्ट को वो बहुत ही टाइटली ग्रास्प करने की कोशिश करे। So इससे होगा क्या? The intention is to clench the fist, to bring the fingers closer to your hand. But because you have placed a firm object, the muscle spindle will remain relatively lengthened. So therefore, actually the intention is to contract, but the end result is a relative lengthening of the muscle spindle. This is going to activate the proximal shoulder muscles and you will find that in your patient you are getting a better shoulder stability. The second type of stretch is known as secondary ending stretch. इसको करना बहुत ही interesting है and इसको करने के लिए all you need to do is you ask the patient to do a movement, you give resistance to that movement, you let the movement happen for some time, after that you increase the resistance. So what you are actually doing is you are allowing the muscle to contract. The intention is to contract, but after some time even a contracting muscle starts lengthening. That is, you are increasing the resistance and challenging the patient. इससे होगा क्या? जो next contraction या जो next effort patient का आएगा, that will be even more powerful because now the patient has a feedback that he needs to improve the effort from his muscle. The third technique in stretch is known as stretch pressure. To deliver this technique, you need to utilize your index finger, your middle finger and your thumb. First, you need to palpate the tendon of the muscle that you need to activate. Now, you need to deliver a downward pressure over the tendon using the 2 fingers and the thumb. And now, while keeping the 2 fingers stationary, you need to move the thumb away from the finger. This is going to activate the muscle spindle and going to produce an increased contraction from the muscle. The 8th and the final technique in this series is known as proprioceptive facilitatory technique. In this, the first subcomponent of it is resistance. Now resistance can do wonder in physical therapy. If you apply resistance properly, you will not only improve the muscle strength of the patient, but you will also motivate the patient to work harder.
रेजिस्टेंस किस तरह से अफेक्ट करता है, आइए समझते हैं। जब आप किसी भी मसल को जो इनएक्टिव है या जो वीक है आप रेजिस्ट करते हैं तो वो मसल शॉर्टनिंग में जाती है। व्हेन द मसल गोज इनटू शॉर्टनिंग, द स्पिंडल ऑफ द मसल also shortens relatively, and when you stretch a muscle spindle that is shortened, it will lead to a better facilitation of that muscle. The second subcomponent in proprioceptive facilitation is known as tapping. You can use this technique using your hand. आपको इसके अंदर करना ये है कि you have to apply 3 to 5 quick repetitions of tapping over the dermatome. जिस भी मसल को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, you use a particular function, ask the patient to do that activity, and when the patient is doing that activity, you give a quick tap over the muscle that you want to facilitate. The third way of giving proprioceptive facilitation is by using vestibular stimulation. Vestibular stimulation को देने के लिए आपको head और neck को different planes में move करना है. That is, you can move the head and neck in the transverse plane by giving the side rotations. You can move the head and neck in the sagittal plane by moving the head and neck up and down, or you can also move the head and neck in the frontal plane by moving the neck sideways. आप तीनों प्लेन्स को यूटिलाइज करके सर्कमडक्टरी मोशंस के थ्रू भी वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन कर सकते हैं। वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन के बारे में रूट्स ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। रूट्स फाउंड आउट दैट इवन बिफोर पेशेंट के अंदर स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी टाइम्स दैट यू सी पेशेंट्स हु आर टोटली हाइपोटोनिक एंड आर ए रिफ्लेक्सिक। इन such type of patients, what you can do is you can start with vestibular stimulation. Vestibular stimulation activates the anti-gravity muscles even before the stretch reflex. The other benefits of vestibular stimulation are it helps in the improvement of tone, improvement of balance, protective responses, cranial nerve functions, because you are stimulating the 8th cranial nerve, which is indirectly stimulating your brainstem. एक और ख़ास बात जो वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन की है, इट हेल्प्स इन द बायलैटरल इंटीग्रेशन, बिकॉज यही एक ऐसा स्टिमुलेशन है जिसमें आप एक साथ दोनों हेमिस्फीयर्स को स्टिमुलेट कर पाते हैं। द लास्ट कॉम्पोनेंट इन प्रोप्रियोसेप्टिव फैसिलिटेशन इज इन्वर्जन. You must have heard about the inversion therapy. There are many ways that you can impart this therapy, but the cheapest way is to use a couch in such a manner that it is tilted at least 60 to 70 degrees. You make the patient lie down prone with the head facing downward. Now inversion produces static vestibular stimulation, which is thought to improve the tone in the extensor muscles of the body. If you do inversion therapy for a shorter period of time, it will lead to stimulation of these muscles and patient can have better control of head and neck, trunk and limb extensor. Please don't forget to like this video. Also, if you have any queries, please put your comments below. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon. So keep learning, keep sharing and stay